Meher Pandey travelled to Pataudi to report on how, despite public evidence of hate speech and despite the presence of close to 100 policemen at this event, there has been no action against the BJP hate neta. These are the videos of hate speeches at a so-called Hindu Mahapanchayat at Pataudi, Haryana that have gone viral. The star speaker, the BJP's Haryana spokesperson, Suraj Pal Amu, appointed to the position just about a month ago. His speeches, as well as of the others, so terrible that we have decided not to air them. Instead, a gist of what was said. Amu says, Muslims cut their moustaches and we can cut throats. We will pick them, Muslims, off one by one, or as he put it in Hindi, chun chun ke thokenge. Make sure that neither will Taimur be born, nor will Aurangzeb, Babur, Humayun. Legal experts say Mr. Amu's speech clearly violates laws governing hate speech in India. Section 153A of the IPC says that anyone who promotes disharmony or feelings of enmity, hatred between religious groups is liable. Section 153B of the IPC says anyone who makes assertions harmful to national integration is also liable. 295A says anyone who deliberately and maliciously tries to insult religious feelings is also liable. The punishment for all three is up to 3 years of jail time, a fine, or both. Despite this, there has been no action against Amu. आपका जो भाषण था उस पर भाषण भी देता हूँ मैं तो भाषण देता नहीं है बातें We met him at his residence in Gurgaon, where he seemed unperturbed by what he said. मुसलमानों के बारे में आपने कहा कि वो अपनी मूंछ काटते हैं, हम गर्दन काटने वाले हैं. नहीं मैं देखो ना मेरी मूंछ में और उनकी मूंछों में अंतर है. मेरी मूंछों में देखना अब थोड़ा करंट है. लेकिन अब उनकी मूंछें जो है उनकी मूंछें जो है यहाँ से साफ होती है. फ़र्क है. मूंछ में फ़र्क है, दाढ़ी में. वो था कि आप ठोक देंगे. वो जो सब आपने देखा शायद आप सुना, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोला. आप लोगों ने कुछ ज़्यादा चलाया होगा. सर मैं आपको दिखा सकती हूँ ये वीडियो. नहीं वो तो आपने अगर बोला है तो सही बोला है. मैंने बोला है तो मुझे मालूम है मैंने क्या बोला है, तो दिखाने की आवश्यकता नहीं है. परंतु मेरा ये मानना है कि मेरे को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है. Also at the event, this man, who was arrested on 30th January last year for shooting at Jamia students protesting against the CAA NRC. One student injured his hand. The shooter was not only present, but spewed hate in the presence of a ruling party politician. पटौदी की महापंचायत में ये भी थे जो जामिया में उन्होंने शूट किया था. मुझे नहीं मुझे जानकारी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता. मुझे जानकारी इन विषयों की नहीं, क्योंकि मैं आ गया था. मुझे नहीं पता कौन आया, परंतु क्या वो जेल से नहीं जो भी आया पंचायत में जाते हुए आप बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हुए, करनी सेना को रिप्रेजेंट करते हुए ऐसे मैं वहाँ पर आप समर्थन करते हैं. चलो एक बात बताता हूँ आपको. एक तो मैं जब भी इन महापंचायतों में जाता हूँ, मैं करनी सेना जिसके 11 लाख से ऊपर सदस्य हैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ. उसके नाते मुझे आमंत्रित किया जाता है. This is the police station at Manesar, Haryana. Pataudi comes under their jurisdiction. Here, they tell us that they have taken no action against Amu or any of the other speakers because no formal complaint has been filed yet. This despite viral videos of the speeches. As of now, we have not received any complaint from any quarters. So, no legal action has been initiated as yet. However, we are analyzing the footages at our end and we are seeking legal opinion that whether anything can be done against in this matter or not. Okay, so correct me if I'm wrong, but 153A, which is promoting enmity, it's a cognizable offence. So you don't need a court warrant. So is there something you are waiting for? Because you can take suo motu cognizance of this event, right? See, ma'am, we are not the complainant in this case. See, the affected party can approach us with their complaint and we can analyze those complaints. But without a complaint also these things can proceed, right? Definitely, we can take cognizance of such of any cognizable offence. We are legally examining this matter. A startling U-turn by the police. First claiming there was no action because of a lack of a complaint, and then saying they don't need a complaint to proceed. What makes police inaction even more startling is that by their own admission, around 100 cops were deployed at the event to prevent any violence. His presence at the Pataudi Mahapanchayat on Sunday. Yes, the police was present there.
Around how many personnel? Around, see, they have been deployed on different duties. Around 100 personnel were deployed. Some people are saying because he has strong connections with BJP, that's why there's been no action against him. No, ma'am, there is nothing like that. It is just that we have not received anything, any complaint in the matter. So that is why there has been no action in this case. The state BJP claims that these are Amu's personal views. सूरजपाल अम्मू जी को भारतीय जनता पार्टी में किसी ऐसी पंचायत में जाने के लिए नहीं होगा। वो गए हैं तो अपनी निजी हैसियत से वहाँ गए हैं। वहाँ भी जो उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं वो अपनी निजी हैसियत से विचार व्यक्त किए हैं। But Amu himself says he's speaking as a proud BJP karyakarta. In fact, Amu was made BJP's Haryana spokesperson just shortly after he had made similar hate speeches at another Mahapanchayat at the end of May in the town of Indri, north of Delhi, where he called for Muslims to leave for Pakistan. आपको बीजेपी का प्रवक्ता इंदिरी के स्पीच के बाद बनाया गया। नहीं, तो मैं- ऐसा लगता है कि बिहाइंड द सीन्स बीजेपी आपको ऐसी बातों के लिए रिवॉर्ड कर रही है। आपकी इसके बारे में चलो आप- मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में करीब 31 सालों से हूँ। मैं ये जो नई टीम बनी इसमें मुझे प्रवक्ता बनाया, उससे पहले भी मैं भाजपा का प्रवक्ता था पिछले टेन्योर में। The speeches have sparked tension here. Muslims from Pataudi say that there has always been a bond between local Hindus and Muslims, but are shocked by the lack of action by the police at the videos. माहौल तो मैम एज इट इज़ है, बट महापंचायत में जो कुछ बात हुई थी, जो क्लिप हमारे पास आई थी एक्चुअली, जो व्हाट्सएप पे शेयर की थी लगभग 1.5 मिनट या 1.25 मिनट की, उसमें कुछ ये मुस्लिम के खिलाफ भड़काऊ बात कही गई थी कि ये हमारी उसे उठा के ला रहे हैं तो हम उनकी उठ से उठा लाएंगे, ऐसे बीच में भी कही है। बट बात ये कि कानून ने अलाउड कैसे किया, किसी ने FIR नहीं की उसके बारे में कि गलत कमेंट किया क्यों, बट इसके अलावा ये पंचायत क्यों हुई या क्या ज़रूरत पड़ी या इस तरह की भड़काऊ बात जो पहले भी अक्सर हुई, एक बार तो घर के सामने ही की थी। मतलब पटौदी का ऐसा माहौल है ही नहीं शुरू से, बट कुछ लोग पॉलिटिकल लीडर जब से सत्ता में है तो उसे ख़राब करना चाह रहे हैं, मतलब हिंदू वर्सेस मुस्लिम। Violent Islamophobic hate speech by a key BJP leader has gone unpunished in Haryana twice in the past 2 months. There is ample evidence to be examined, but no action by police so far. A truly alarming pattern. With Xavier Thomas, Meher Pandey for NDTV.